Thank you everyone for your kind appreciation. Uh, yes, because when you'll go for fifth and sixth cycle of NAC, they are not going to see the college accreditation. They see the department accreditation. They see the person, individual person. They will do the student accreditation. इतना minutely जाते हैं वो लोग. So अगर आप कुछ करते हो उसका क्या कब benefit मिलेगा? No, we don't know. ठीक है, fine. Now let us come to our topic, that is ratio analysis. Just now I have told you that is a part of management accounting in our syllabus. So only this topic is there from management accounting, and rest all we will see. We have chapters from cost accounting, which we will see in due course. So in we also understood how the ratio analysis is assisting us very effectively, not in absolute term, but also in percentage term. It guided us. It guiding all the managers to take appropriate actions and decisions for companies' upliftment or development, etc., etc. So when we'll go for learning this financial analysis, which we have categorically seen in a different type of analysis. Honestly speaking, we have seen uh, your trend analysis, comparative, common size, and now a balance sheet. As I have rightly stated that we have classifying ratios in different categories. Okay, income statement ratio, balance sheet ratio, composite ratio, etc., etc., or combined ratio, etc. Yes, I hope these things has been already discussed, and I'll tell you why we are giving this nomenclature as income statement or P&L ratio, or giving nomenclature as balance sheet ratio, etc., etc. Okay. Then here slowly and gradually I have expressed everything in detail. Just now we had a discussion with you all how the profit and loss ratios can be expressed and explained. Uh, Similarly, all the ratios, detailed description, their importance, how to be calculated, has been explained here in the text, in my textbook. So you can go and read, analyze, because being the MPhil student, it is very important for you to understand these things in detail. आपके लिए जानना बहुत ही important है, because this you are going to apply in your research and other things in days to come. Okay, पूरा डिटेल है और उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ऑल्सो गिवन वेरी वेरी इफेक्टिवली. So आप when you will read, you will understand. Am I right? Will it do, dear student? Yes, sir. Okay, okay, fine. Thank you. I'm going to take you to the fast ride. जब भी हम लोग सब बोलते हैं ना, एक we make one page, one pager. So वहां पे हम लोग जाएंगे, and thereby I will discuss all these approx 35 ratios together. है ना? These are individual expression, explanation, calculation, small examples, and including the limitations. I told you lot many advantage, but limited. And these kind of theory questions are very much expected in your exam. Very much expected in your exam. Yes, I will talk about this summary part. So just now I have told you all that ratio we basically categorize in three category: P&L, balance sheet, and combined. P&L ratios are those ratios. I mean, this is for. I mean, I have done it because it is easy for us to recollect, remember, reproduce.
during examination or any purposes, or for your teaching also, because I know all of you are teacher in one or other colleges. So it's very easy for recollect all the ratios. So let me start with profit and loss ratio. Thereby we have gross profit ratio. And what I did, I have made the serial number. I have expressed in terms of what is the ratio, then their formulas. Okay. Then how it has been expressed, suitability, whether high ratio is suitable for them or low ratio is suitable for them, purposes, why we compute these ratios, and their remarks. Okay. So in P&L ratio, we have 6 ratios. One is gross profit ratio. The formula is very simple. Gross profit upon net sales into 100. Whenever any ratios is multiplying with 100, it will always be expressed in terms of percentage. Keep, remember in your mind always, it will be expressed in terms of percentage. Suitable, as it is the profit, high ratio will always suitable for the company. Why we are calculating? To see the profitability, efficiency, how the company goes, etc, etc. Then of course net profit ratio. Actually net profit further, as we have seen in the vertical statement, net profit has been further classified into different categories: operating net profit, net profit before tax, net profit after tax, etc, etc. For all these we can have the different ratios, because every stage net profit is very important, very crucial for top level managers to take the decision. So any net profit ratio when we talk about, so operating net profit upon net sales into 100, net profit before tax upon net profit before tax upon net sales into 100, net profit after tax upon net sales into 100. Whenever it is multiplied by 100, just now I have discussed with you all, it is always to be expressed in terms of percentage. And always high ratio is suitable for the company. Similarly, you can have the expenses ratio with you. You have seen that when we have studied the vertical statement, we have classified expenses into uh, office and administration, selling and distribution, financial, etc. So for each and every expenses, you can have separate ratio. Selling and distribution expenses upon net sales into 100, financial expenses upon net sales into 100. Or categorically, we can have, operating ratio. Okay. Or per se operating expenses ratio also. Operating expenses upon net sales into 100. But operating ratio means what? We include both, because operation means from production till the distribution. So many a time student does error over here. What they make errors over here, when they compute the operating ratio, they always take net operating expenses upon net sales in 200, which is wrong. You have to take cost of sales plus operating expenses. This is entirely required for operations. Cost of sales plus operating expenses upon net sales into 100. Then we have stock ratio, stock turnover ratio. We know stock is subclassified into 3 categories: raw material, WIP, and finished goods. Okay. So raw material turnover ratio. Now here raw material consumed upon average stock of raw material. Average म्हणजे opening plus closing divided by 2. If opening is not given, closing to be considered as average stock. It is expressed in terms of times. Again, high ratio. Expenses, low ratio is better for. So these 5 ratios are known as P&L ratio. Similarly, if we'll go to WIP turnover ratio and finished goods turnover ratio, just now you have seen Yogita has very rightly stated cost of goods sold upon average stock of finished goods. So these 5 ratios are known as, I think things are very clear in front of you. ये 4 और अभी एक पांचवा मैं आपको रेशियो स्टॉक टर्नओवर की बात करूंगा. ठीक है. जीपी समझ में आ गया, एनपी समझ में आ गया. दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ टेक्स्ट बुक जस्ट नाउ व्हाट आई हैव टोल्ड यू. है ना? The fifth one was stock turnover ratio. Why it is known as
प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो, बस कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देख लो, कहां से मिलेगा आपको? पीएनएल स्टेटमेंट से मिलेगा। यस और नो? परफेक्ट? एनी डिफिकल्टीज टू रिमेम्बर, रिकलेक्ट? कोई प्रॉब्लम आएगा आप लोगों को, बताइए। Easy to remember and recollect? Okay, thank you. Now we have balance sheet ratio. So after fifth, six balance sheet ratios we have. Okay. Thereby we have current ratio, quick ratio. So balance sheet ratio, basically we compute to know the solvency, how solvent the company is. You must have seen there are big companies which got insolvent, including Jet Airways, including Vijay Mallya ka, that Kingfisher Airline, etc., etc. Insolvent. Why? Because the solvency was not high. Why? They could not continue with their losses. उससे ज्यादा loss Air India कर रहा है, still they are able to survive. Why? Because their solvency is very high. Government is giving funding to them and they are continuing their business, enjoying the things. Of course, government is taking from our tax what we pay to them. Agreed or not? So solvency is very, very critical and important. Short-term solvency, इमीडिएट सॉल्वेंसी एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। आपको क्या लगता है, जेट एयरवेज के पास अभी वापस जेट एयरवेज रिवाइव हो रहा है, आपको पता है? तो उनके पास पे ऑफ करने के लिए पैसे नहीं थे। इसके लिए वो बड़ी से बड़ी कंपनी जिसने 30 साल एविएशन में अपना नाम बनाने में पूरा जिंदगी निकाल दिया, एक एक दो महीने में उड़ गए पूरे। सो एवरी सॉल्वेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. Say for example, to understand solvency, I can illustrate. Nilofer has taken 5,000 rupees from Prajakta or 10,000 rupees. पैसे लिए फिर दे नहीं रही है. Prajakta started complaining कि we are not getting. One fine day, after 2-3 years, Prajakta found Nilofer. Nilofer immediately when she met Prajakta, she has given all the 10,000 rupees, which shows that her immediate solvency is very sound. उसके पास to pay off the liability, she has enough liquid cash. दूसरे सिचुएशन में क्या हो रहा है, Nilofer has not having the funds with her, immediately took the Prajakta into nearby ATM, withdraw the cash and given to her 11,000 rupees. बोला चलो एक साल मैंने वापरा, 1,000 रुपया तुम इसका इंटरेस्ट ले लो प्राजक्ता. That also shows that she has very, very, strong short-term solvency with her. समझ में आया? Third situation, Nilofer has 5 Oppo phone. उसमें से एक phone which has costing 15,000 rupees प्राजक्ता को दे देती है. Here also it shows that her asset, long-term solvency is very sound. She has plenty of asset. एक asset उठा के दे दिया. So this solvency is very vital and important when we take the decision for companies. Short-term solvency, immediate solvency, and long-term solvency. I think the fundamental is clear to you all, because this all will come in expression expression of balance sheet ratio. It will come. Okay. So balance sheet ratio may you have just now seen. I told you 6 ratios: current ratio, quick ratio, debt equity ratio, uh, proprietary ratio. Then we have current, quick, debt equity, proprietary, then stock working capital. These ratios are, and capital gearing. Yes, capital gearing ratio.
Okay, this will be part of this. These are 6 ratios which are balance sheet ratio. So current ratio is current asset upon current liability. You know which are current asset. We have just seen during last lecture entire statement of vertical statement. So thereby it is pure form, इस टू फॉर्म में आता है. So आपने देखा टाइम्स में भी आता है, आपने देखा परसेंटेज में भी आता है, अभी आप देख रहे हो प्योर फॉर्म में भी आता है. एंड यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, इमीडिएट सॉल्वेंसी, राइट. क्विक रेशियो में क्या करना है, करंट रेशियो में से यू हैव टू, करंट एसेट में से आपको क्या करना है, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस एक्सक्लूड करना है. क्विक लायबिलिटी के लिए करंट लायबिलिटी से बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट माइनस करना है. आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल. यस और नो. स्टॉक वर्किंग कैपिटल के लिए क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल इंटू 100. जब भी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज फॉर्म. प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस निकाल देने का इंटू 100. डेट इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, एंड एवरीथिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. नाउ हेंस फोर्थ एक्सेप्ट कैपिटल गियरिंग, ये इधर आ जाएगा प्लीज. एक्सेप्ट कैपिटल गियरिंग, रेस्ट ऑल आर कंबाइंड रेशियो. वाई कंबाइंड रेशियो? अगर प्रॉफिट पीएनएल से आता है तो कैपिटल एम्प्लॉयड बैलेंस शीट से आएगा. यहां पे आपने देखा सब बैलेंस शीट का था. So returns on capital employed, operating net profit plus interest upon capital employed. Everything is very self-explanatory. So return on capital employed, return on total asset, returns on proprietors fund. These all are combined ratio because one part is from P&L, other part is from balance sheet. One part is from P&L, other part is from balance sheet. That is why it is known as, even in just now session only we had a deliberation and discussion regarding debtors turnover ratio. Yes? Creditors turnover ratio. Earning per share ratio. Now these ratios we are calculating for investment into the market to know the efficiency of the company, whether we should invest in them or not. है ना? Net profit after tax minus preference dividend divided by number of equity. Price earning ratio, market price upon EPS. ये per share कितना मिलेगा? Express in terms of rupees, express in terms of times, express in terms of percentage. So we should remember and recollect all these 32 ratios. Then only there will be one type of question whereby they will just give you the detail and they'll ask you to compute the ratios. And there is another type of question where we will go for reverse calculation. Reverse calculation के लिए अपने को क्या आना चाहिए? सारे formulas आना चाहिए. Then only you can apply them. Agreed or not? You want me to solve this kind of simple question? ये सारी चीज दिया हुआ और पूछता है एक्सपेंस रेशियो बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताओ. आप चाहते हो कि मैं ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करूं? नो सर, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर. नाउ बट मैं चाहता हूं कि आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो. व्हाई? बिकॉज फॉर योर प्रैक्टिस. एम आई राइट? क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, आंसर्स भी दिए हुए हैं, बट मुझे पूरा यकीन है कि आप आंसर्स कॉपी नहीं करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नॉट ओनली दिस, अभी पहले बेस बनाओ. नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू आस्क ऑल रेशियोज. कोई भी रेशियोज पूछ सकता हूं मैं बाय नेक्स्ट सैटरडे, बिकॉज मैं चाहता हूं एक एक टॉपिक धीरे धीरे खत्म करने पड़ेंगे. देन ओनली विल बी एबल टू रीच आउट efficiently and effectively. Okay. And there are many unsolved illustration also. आपको पता है ये कहां से लेना है? आपको मैंने अभी दिखा दिया था, वेबसाइट पे जाना है, बुक ले लेना है. नहीं आपको खरीदना है, सॉरी आपको नहीं डाउनलोड करना है तो वेबसाइट पे जाके पढ़ के वापस रख सकते हैं. देखो
ये सब रिवर्स कैलकुलेशन वाला है, ये अनसॉल्व भी है। तो अगर आपको बहुत एफिशिएंसी है तो आप अनसॉल्व वाले क्वेश्चंस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल इलास्ट्रेशन एंड सॉल्व अनसॉल्व इलास्ट्रेशन आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, और मुझे आपके नोटबुक दिखाने का। आई थिंक नीलोफर जब भी उन बच्चों से बुक लेगी, वो लोग ने बहुत इफेक्टिवली बुक मेंटेन करा हुआ है। नीलोफर, so this is how the things has completed. Let me stop, pause recording. हाँ, stop sharing. Now let us have, हाँ, now अभी रिकॉर्डिंग बंद हो चुका है। सो अभी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, वी हैव 3 मिनट्स। मैंने दो बच्चों के नंबर्स एंड डिटेल दिए थे नीलोफर, एक राहुल था और एक क्या नाम था, मैं यस भूल। सर। तो उन लोगों से ले लेना है एंड देखना उन लोग, उनके ना कैसे उन लोग डेट वाइज, अभी जैसे मैंने आज एक असाइनमेंट दिया, तो दिस रेशियो एनालिसिस इज असाइनमेंट टुडे। तो पहले आपको थियरीज लिखना है रेशियो के बारे में, एंड ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्यों ये सब करना है? बिकॉज इट कैरीज 50 मार्क्स। इसके आपको 50 मार्क मिलेंगे अटेंडेंस के, प्लस ये जो असाइनमेंट है। थैंक यू प्रशांत। सो जो असाइनमेंट्स हैं, और जो मैं पास्ट पेपर्स सॉल्व करने के लिए बोलूंगा। आप लोगों में से कितने को 100 मार्क्स आए अभी तक, 100 आउट ऑफ 100? किसी को नहीं आया ना? अगर आप ऐसे रेगुलर आओगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ एमफिल में बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 आता है अकाउंट्स में, और ये हर एक साल आता है। यही एक सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 आता है, क्योंकि मैं फंडामेंटल इतना स्ट्रांग कर देता हूं बच्चों का कि आई मीन ऑल द क्वेश्चंस दे आर अटेम्प्टिंग वेरी एफिशिएंटली, और उतना मेहनत भी करवाता हूं, बहुत मेहनत करवाता हूं बच्चों से। आई फील दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, so like these regular student who are regular in the class, I expect their cooperation with me and for their better future. So uh, आज मैं बहुत सारे होमवर्क दे रहा हूँ, सो डेफिनेटली आई विल नॉट गोइंग टू कीप योर सेशन टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। आई एम गिविंग यू अ टाइम ऑफ अ वीक, बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं चाहूंगा कि थोड़ा एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेके एक दो चैप्टर थोड़े बड़े बड़े खत्म कर लेंगे, तो थिंग्स विल बी ईज फॉर अस। ओके, सो यू विल डाउनलोड द बुक एंड यू विल स्टार्ट। अभी हमको अलग अलग चैप्टर के लिए, इसलिए वो जो बुक नीलोफर ने बोला है, वो अगर एक बुक ले लोगे तो उसमें सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, अगर आपको अलग अलग बुक से रेफरेंस करनी है एंड यू हैव टू सेव मनी, तो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे आप फॉलो करो, हर एक बुक में से ज्यादा नहीं, दो बुक में सब कुछ कवर हो जाएगा, पूरे सिलेबस। ठीक है, so kindly maintain your, because by them when your exam will come we will be having offline things। तो ऐसा नहीं बोलने का कि सर ने ऑनलाइन समझाया था हमको नहीं, तभी ये सारी चीज असेस होगी और आपको मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू again, be safe, take care, be at home, follow all the instruction. God bless you. See you on next Saturday.